कंटिन्यू कर रहे हैं इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन से। हम अपनी बुकलेट का अगला क्वेश्चन ले रहे हैं। नाउ वी टेक इट क्वेश्चन नंबर 4th ऑफ आवर असाइनमेंट, क्वेश्चन नंबर 5th ऑफ आवर असाइनमेंट। क्वेश्चन नंबर 5th is fx is equal to x ax minus x square, a greater than 0, then a option we have increases on 0 comma 3a by 4, decreases on 3a comma 4 comma a, b increases on 3a comma 4 comma a, decreases on 0 comma 3a by 4. C option, it is decreases on 0 comma a, and the D option is increases on 0 comma a. These are the four options we have been given out. Now fx, this is question number 5. Now this is fx and we find out f dash x. f dash x में हम सबसे पहले क्या निकालेंगे? हम सबसे पहले निकालेंगे डेरिवेटिव। डेरिवेटिव प्रोडक्ट रूल लगेगा यहाँ पे। इट कम्स आउट टू बी x इंटू हाफ ax माइनस एक्स स्क्वायर द पावर माइनस हाफ इंटू a माइनस 2x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ax माइनस एक्स स्क्वायर इंटू x का डिफरेंशिएशन 1. This is x upon square root of ax minus x square. This is a minus 2x plus square root of ax minus x square. This is equal to ax minus 2x square plus 2ax minus 2x square upon 2 ax minus x square. This is equal to 3ax minus 4x square upon 2. It is ax minus x square. This is our f dash x. Now we reach it over here. हमने बताना है कि this is increases and decreases in which interval, or a is given to be positive. Since square root of ax minus x square always positive, और इसमें क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं? ax minus x square should be greater than 0. I can say it is x into x minus a less than 0. I can say x belongs to 0 comma a. This is the maximum limit of a x. ज़्यादा से ज़्यादा हम x की वैल्यू 0 से लेके a तक डाल सकते हैं. Now the thing it comes out to be, it is f dash x क्या आएगा? न्यूमरेटर. पहले हम लेते हैं, it is f dash x is equal to, I can write down, it is minus x common. We are left with 4x minus 3 upon, it comes out to be 2 times square root of ax minus x square. Now let fx is increasing. Let fx is increasing. Fx is increasing, that means it comes out to be f dash x will be greater than 0 minus x into 4x minus 3a upon 0. It is 4x minus 3a greater than 0. Divide by minus 1. This is x into 4x minus 3a less than 0. Now it means x, it is 0 and it is 3a by 4. We draw a wavy curve method, positive, negative, positive. X belongs to 0 comma 3a by 4.
for x, for fx is increasing. Fx is increasing for 0 to 3, 0 to 3a by 4, and fx is decreasing. Fx is decreasing for, it comes out to be, sorry, यहाँ पे हम it comes out to हमें चेक करना पड़ेगा. यहाँ पे हमने लिया था let fx is equal to increasing. It comes out to be 0 to 3a by 4. Increases on 3a. हमने देखना किसमें डिक्रीज कर रहा है, किसमें इंक्रीज कर रहा है. आई अगेन चेक इट आउट. मेरे को लग रहा है कोई गलती हुई है यहाँ पर. हमने एफ डैश एक्स लिया. इट कम्स आउट टू बी एक्स इंटू हाफ इंटू ए एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इंटू इट कम्स आउट टू बी इट इज ए माइनस 2x. Then it comes out to be it is 2a ax minus 2a. It comes out to be ax minus 2ax minus 2ax. Then it comes out to be it is 3ax minus 4x square. This is equal to 3ax minus 4ax square. Now I can say this is positive. X की ज़्यादा से ज़्यादा लिमिट हम पुट कर सकते हैं 0 से लेके. This is our f dash x. It is minus x into 4x minus 3 into 2 into this one. Now it comes out to be it is fx is increases in what? Fx is increases in, it comes out to be 0 to 3a by 4. That's it fine. बिल्कुल ठीक है यहाँ तक. fx is increases in 0 to 3a and fx is decreases. fx कहाँ पे डिक्रीज करेगा? It is x belongs to it is 3a by 4 comma a. क्यों? ये वाला इंटरवल हम रिजेक्ट कर देंगे क्योंकि x की वैल्यू लेस देन 0 नहीं हो नहीं सकती. दे फ्रॉम दिस रिलेशन x बिलोंग टू 0 कॉमा a. सो द राइट ऑप्शन इज ए पार्ट. क्या हमने किया? डेरिवेटिव किया एंड वी फाइंड आउट माइनस एक्स इंटू 4x माइनस 3. पहले हमने लिया इस इंटरवल में इंक्रीज कर रहा है. सो x इंटू 4x माइनस 3a विल बी लेस देन 0. बिटवीन 0 to 3a by 4 fx is increasing and fx is decreasing for it is 3a by 4 to it is a. So the right option is a part. नाउ फिफ्थ क्वेश्चन के बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी बुकलेट का, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ आवर बुकलेट इज fx is equal to 2 sin x minus 3 sin square x plus 12 sin x plus 5. X lies between 0 and pi by 2. Then fx is a part decreasing on 0 comma pi by 2. B option we have increases on 0 comma pi by 2. C option is increases on 0 comma pi by 4, decreases on pi by 4 comma pi by 2, and D is none of these. Now these options we have been given out. Now we simply proceed it by just simply differentiating. We find out the derivative first of all. F dash x is equal to 2 3 sin square x into cos x minus 6 sin x into cos x plus 12 cos x plus 0. This is cos x common. We are left with 6 sin square x minus 6 sin x plus 12. This is cos x into 6 sin square x minus sin x plus 2.
Now clearly this is x lies between 0 and pi by 2. We have been given out. Now what I'll try to make it, I'll try to make it perfect square cos x into 6 sin square x minus sin x plus 1 by 2 the whole square plus 2 minus 1 by 4. This is equal to 6 into cos x sin x into minus 1 by 2 the whole square. It is 4 to the, it is root 7 by 4. I will say for all x, sin x minus 1 by 2 the whole square is always plus 7 by 4 is always greater than 0. So एक बार फिर देखो इस क्वेश्चन को हमने हमने बताना है ये फंक्शन कहां से कहां तक इंक्रीज कर रहा है, कहां से कहां तक डिक्रीज कर रहा है. उसको अब हम कैसे करेंगे. हमने f dash x निकाला. इट कम्स आउट टू बी 6 sin square x cos x minus 6 sin x cos x 12 cos x cos x comma it becomes quadratic in sin x. Quadratic in sin x बन गया तो मैंने क्या किया, I find out a perfect square in, I make the perfect square in sin x. Now this quantity will be always positive because this is a sum of squares of two quantities. So this is always positive. So इसका मतलब हमारा क्या रह गया, हमारा डिपेंड करता है कि cos x के ऊपर. If cos x greater than 0, then f dash x is greater than 0. If cos x less than 0, then f dash x is less than 0. If cos x positive, f dash x greater than 0, मतलब f x is increasing. अब किस इंटरवल में f x increase करेगा. Now we know that say cos x is positive in first quadrant and fourth quadrant. So हमें given as say it is first quadrant में, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, cos x positive in first quadrant, I will say it is fx is increasing. Fx is equal to, it is, I can say this first of all, cos x is positive in first quadrant. So 6 cos x into sin x minus half the whole square plus 7 by 4 is greater than 0 in 0 comma pi by 2. That means f dash x is greater than 0. I will say fx is increasing. Fx is increasing in 0 to pi by 2. That means B part is our answer, that is B part. So question number 6 ki the right option is B part. Now we come to next one. The next question is question number 7th of our booklet. Question number 7th is y is equal to 2x plus cot inverse x plus log square root of 1 plus x square minus x. Then dy by dx is equal to, then y a part. A option we have been given decreases on minus infinity to infinity. B option is decreases on 0 to infinity. C option is neither decreases nor increases on 0 comma infinity. D increases on minus infinity to infinity. So these 4 options we have been given out. So अब हम कैसे करेंगे, generalized method will find out the derivative. dy by dx is equal to 2 plus 1 upon 1 plus x square plus 1 upon square root of 1 plus x square minus x. dy dx of, it is square root of 1 plus x square minus x.
this is 2 plus square root of 1, this is minus cot इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है, it is 1 upon 1 plus x square minus 1 upon x square, this is minus 1 upon 1 plus x square. Now this is equal to 1 upon square root of 1 plus x square minus x into 1 by 2 1 plus x square to the power minus half into 2x minus x1. This is 2 minus 1 upon 1 plus x square 1 upon square root of 1 plus x square minus x. 2 and 2 will be cancelled out, x upon square root of 1 plus x square minus 1. I can say this is 2 minus 1 upon 1 plus x square plus 1 upon square root of 1 plus x square minus x. This is minus square root of 1 plus x square minus x upon square root of 1 plus x square. This will be cancelled out. This is dy by dx. dy by dx is 2 minus 1 upon 1 plus x square. It is minus square root of 1 plus x square. So dy by dx is 2 minus 1 upon 1 plus x square minus 1 upon square root of 1 plus x square. We know that this is for all x. For all x, it comes out to be see हम यहाँ पर क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं, इट इज हम x की क्या वैल्यू पुट फॉर ऑल x से हमें गिवन है, हमें बताना है किसमें है. फॉर ऑल x 1 upon 1 plus x square plus square root of 1 plus x square is always positive. It is always positive. See 1 upon 1 plus x square, I can say this is 2 minus, this is first of all minus 1 upon 1 plus x square plus square root of 1 plus x square. This will be equal to, this is greater than 0. Sorry, this is less than 0. This is equal to less than 0. Or we can say 2 minus 1 upon 1 plus x square plus 1 upon square root of 1 plus x square is always greater than 0. क्योंकि इसकी वैल्यू इट इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 2. द इट इज इसकी वैल्यू क्या होगी, इट इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 2. इट इज 1 upon 1 plus x square lies between 0 and 1. So इसकी ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू क्या हो जाएगी, इट कम्स आउट टू बी लेस देन 2. So I'll say f dash x greater than 0. So I'll say fx is increases. Fx is equal to increases. It comes out to be on. अब किस में आएगा, it is, we can say it is minus, increases on minus infinity to infinity. हम x की जगह इसमें डायरेक्ट वैल्यू 0 भी पुट कर देंगे तो it comes out to be it is dy by dx is equal to 0. We'll say at x is equal to 0 particularly वो आता है, but from minus infinity to infinity the function will always comes out to be, it is always comes out to be increasing one. So right option is, it is D part. Now we come to the next question. The next question is, this is question number 8. Question number 8. Let f be an increasing function. Let f be increasing function on a comma b and g be a decreasing function
and G be a decreasing function on A comma B to A comma B. Let f हमें given है f is increasing function, G be decreasing function. Then A part FOG is decreasing function. B option we have GOF is increasing function. C is FOG. FOG is increasing function. And D is none of these. Let F be increasing function on AB. So we'll say, what we'll say it is, we take it, let x1 and x2 on AB. Say it is let x1 comma x2, where x1 x2 belongs to A comma B. Now I take it let x1 and I just take it two variables because इसमें as such कुछ दे नहीं रखा from A to B. A and B are not defined, so I'll just take it two variables that are A and B, and A and B belongs to both. X1 and x2 both belongs to between A and B. Now I can say this is x1 is less than x2 since gx is decreasing function. We have been given since gx is decreasing function, that means g of x1 must be greater than g of x2, because in generalized we know that यदि हम this gx1, if x1 less than x2 or gx कोई decreasing function है, then sign of inequality will be reversed. Now it comes out to be next one, since also, since fx1 is less than fx2, as fx is increasing function, fx is increasing function, so we know that FOG and GOF, it comes out to be f of g of x1, f of gx1 should be greater than f of g of x2. f of gx1 is greater than f of gx2. इसका मतलब क्या हुआ? I can say x1 is less than x2 and it is FOG is what? It comes out to be it is FOG. FOG का साइन चेंज हो गया तो FOG is decreasing function. FOG is decreasing function. Now the right option it comes out to be A, but हमें अब GOF भी दे रखा है. GOF क्या है? GOF is equal to G of fx. Now we'll say this one. This is x1 x2, x1 less than x2, f of x1 is less than f of x2. Gx is decreasing function. So g of f of x1 will be greater than g of f of x2. So which implies GOF is also decreasing function. GOF is also decreasing function. The right option it comes out to be A part. Question number 8 का आंसर है A. एक बार फिर इसको ध्यान से समझ लो. It is an important question, important step and it is indifferent question. क्या इसमें डिफरेंट है? इसमें देखो हमें गिवन है fx कोई इंक्रीजिंग फंक्शन है ऑन a कॉमा b. मेरे को मैंने दो वेरिएबल ले लिए, एक वेरिएबल ले लिया x1, एक वेरिएबल ले लिया x2. x1 comma x2 belongs to a comma b. Now gx is decreasing function, so g of x2 is must be greater than gx2.
where fx is increasing function, so f of x1 is less than x of x2. अब यहां तक आ गया, अब हमें दिखाना है एफ ओ जी। अब हमारे माइंड में है, मेरे को एफ ओ जी पता है, डेट इज इक्वल टू एफ ऑफ जी एक्स। सो एफ ऑफ एक्स इज इट कम्स आउट टू बी, यहां पर क्या आ रहा है, एफ ऑफ एक्स इज लेस देन एफ एक्स टू। सो इनका एफ लेंगे, इट विल बी व्हाट, इट विल बी ग्रेटर देन दिस वन। f of gx1 will be greater and sign will be reverse, sign will be reverse, so that means इसका मतलब क्या हो गया, it is x1 less than x2, f of gx1 is greater than f of gx2, so f of g is decreasing function. I take it gof, यहाँ पे x1 x1 x2 है, fx1 is less than fx2, so gx is क्या आ जाएगा, it is gof, gx decreasing function है, so g of fx when be sign will be changed, it is greater than g of fx2. I will say g of x is also decreasing function. So right answer is A part. Now I come to next question, that is question number 9th of our booklet. Question number 9th is, the function fx is equal to sin 4x plus cos 4x increases if A part x lies between 0 and pi by 8, b pi by 4, 3 pi by 8, c 3 pi by 8, it is 5 pi by 8, d 5 pi by 8, it is x is 3 pi by 4. So fx is equal to this one increases, fx is equal to sin power 4x plus cos power 4x, f dash x is equal to, it is 4 sin cube x cos x minus 4 cos cube x into sin x. जब भी नॉर्मल एक वही मेथड है, जब भी हमें इंक्रीजेस डिक्रीजेस चेकआउट करना है, वी ऑलवेज लुक फॉर डेरिवेटिव. एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 4 sin x cos x common. I am left with sin square x minus cos square x. F dash x is equal to 2 into 2 sin x cos x. This is minus cos 2x. This is minus 2 sin 2x into cos 2x. This is equal to minus sin 4x. सो हमारा जो एफ डैश एक्स बन गया, इट इज माइनस साइन 4x. अब हमने देखना है कि एफ डैश एक्स जो सा है, वी नो साइन 4x is positive, sin 4x is positive in first and second quadrant. Then I can say minus sin 4x. Minus sin 4x is positive in third and fourth quadrant. That means 4x lies between pi and 2 pi. That means 4x की, because sin 4x क्या आएगा, माइनस साइन 4x कब पॉजिटिव होगा, जब sin 4x नेगेटिव होगा. sin 4x कब नेगेटिव होगा, if it is 4x lies between pi and 2 pi. It comes out to be x lies between pi by 4 to it is pi by 2.
So it comes out to be, it is pi by 4 to pi by 2. Now which interval have been given out? It comes out to be, this is 3 pi by 8, 5 pi by 8, pi by 4 to pi by 4. Now we check it out, 3 pi by 8 कहाँ से कौन सा इंटरवल होगा? So we find out here it is 3 pi by 8. 3 into pi by 8, it is 180 into 8. It comes out to be 845 upon 2. It is 135 upon 2. It is 135 upon 2. 135 upon 2 is less than 90. Then we go for 5 pi by 8. 5 into 180 upon 8. 45 into 5. It is 225 by 2. It is greater than pi by 2. It is greater than pi by 2. So basically we find out किस फंक्शन में किस में एंट्री कर रहा है. चारों जो ऑप्शंस है उसमें गिवन है. I will say x belongs to pi by 4 to 3 pi by 8. क्योंकि जो भी वैल्यू है उसकी पाई बाय 2 से वैल्यू, जो भी इंटरवल होगा उसकी पाई बाय 2 से वैल्यू कम होनी चाहिए. फ्रॉम x लाइज बिटवीन पाई बाय 4 टू 3 पाई बाय 4 8. minus sin 4x is positive, or I can say fx is increasing. Fx is increasing in, it is pi by 4 to 3 pi by 8, that is B part. एक बार फिर इस क्वेश्चन को आराम से समझ लो. वी फाइंड आउट एफ डैश एक्स माइनस साइन 4x. नाउ साइन 4x इज पॉजिटिव इन सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट. सो 4x लाइज बिटवीन पाई एंड पाई बाय 4 एंड पाई बाय 2. नाउ इसमें अब हमने इंटरवल चेक करना है. 3 पाई बाय 8 इज लेस देन, इट इज 90. 5 पाई बाय 8 इज ग्रेटर देन 90. सो हमारी जो वैल्यू है लेस देन 90 आनी चाहिए. द राइटफुल आंसर इज बी पार्ट. हम कंटिन्यू कर रहे हैं इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन से. नेक्स्ट प्रॉब्लम ऑफ अवर बुकलेट इज, दिस इज क्वेश्चन नंबर 11. y is equal to x minus cot inverse x minus log x plus square root of x square plus 1 dy by dx 1 minus 1 upon x square. It comes out to be, it is cot inverse x का होगा, it is minus 1 upon, it becomes plus minus 1 upon x plus square root of x plus x square. It is 1 plus 1 by 2. It is x square plus 1 the power minus half into 2x. Now we proceed it. It is 1 upon 1 plus x square minus 1 upon x plus square root of x square plus 1 into 2 से 2 cancel out हो जाएगा. We are left with 1 plus x into x square plus 1. This is 1 plus 1 upon x square minus 1 upon x square plus 1 square root of x square plus 1 upon x into square root of x square plus 1. This whole term will be cancelled out and we are left with, this is 1 plus 1 upon 1 plus x square minus 1 upon x square plus 1 dy by dx. ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है और ये पूरा क्वेश्चन मैं लिखा नहीं है. ये लिखा है y इज इक्वल टू दिस वन इज इंक्रीजिंग ऑन A option we have, it is minus infinity to 0. B is, it is infinity to 0. C is 0 to infinity. D is minus infinity to infinity. Now these are the four options we have been left out.
हमें चार ऑप्शन गिवन है और हमने क्या निकाला, dy/dx। क्यों निकाला, बिकॉज हमें इतना पता है द टर्म इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के लिए वी फाइंड आउट द डेरिवेटिव। if derivative comes out to be positive, then function is increasing. If derivative is negative, function is decreasing. That means I can say from here 1 upon 1 plus x square is always greater than square root of x square plus 1. क्लियरली बिकॉज ये स्क्वायर रूट के अंदर है एंड ये स्क्वायर रूट के बाहर, इसमें कोई स्क्वायर रूट नहीं है। क्लियरली दिस टर्म इज ग्रेटर देन दिस वन। आल्सो 1 plus x square will be also greater than square root of x square plus 1. Now I can say it is 1 plus 1 upon square root of 1 plus x square minus 1 upon x square plus 1 is greater than 0. This is greater than 0. I will say f dash x is greater than 0. I will say fx is increasing function. fx is increasing function. डेरिवेटिव निकाला, उसके बाद इस क्वेश्चन में एज सच कुछ कोई भी इंटरवल नहीं गिवन है। इट मीन्स फॉर और रियल एक्स, फॉर और रियल एक्स वी आई फाइंड आउट, क्या मैंने देखा 1 upon 1 plus x square will be greater than this one. सो जब इस लेफ्ट बड़ी वाली साइड में 1 ऐड कर देंगे ये इससे फिर ग्रेटर रहेगी। नाउ आई कैन से 1 plus this whole will be, this whole becomes f dash x. f dash x positive, that means fx is increasing function. fx is increasing function for what? We are taking it for all x. fx is increasing function for all x. As x square आता है for negative and positive x, it will be positive. So it is the answer. This is increasing function for all x. And interval will be from minus infinity to infinity. अब एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। लेकिन एक क्वेश्चन नंबर 10 से पहले हमें एक बात समझनी पड़ेगी, एक कंसेप्ट है, दैट कंसेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, पॉइंट टू रिमेंबर। उसके ऊपर ये क्वेश्चन है, पॉइंट टू रिमेंबर। पहला होता है इफ x1 लेस देन x2 and f of x1 is less than f of x2, then fx is increasing function. Then fx is increasing function. If x1 less than x2 and f of x1 is greater than f of x2, then fx is decreasing function. Now यहां से we conclude also क्या, if x1 is less than x2 and fx is increasing, fx is increasing function, then f of x1 is less than fx. जो इंपॉर्टेंट थिंग इंक्लूड की कि सपोज हमें गिवन है x1 लेस देन x2 और हमें गिवन है f of x is increasing, I can say f of x1 is less than f of x2. Same here, it is if x1 is less than x2 and fx is decreasing function, and if fx is decreasing function, then f of x1 is greater than f of x2. Then next, if x greater than 0 and f of x is greater than, sorry, and fx is increasing function and fx is increasing function, then f of x is greater than f of 0.
Here we can say if x greater than 0 and fx is decreasing function, fx is decreasing function, we can say then f of x is less than f of 0. This is the result, we'll use it. This is the result, I can say this is the result, this is the result, we will use it. This result, we will use it. एक बड़ा अच्छा रिजल्ट है और इसके बेस पर हमारे पास जो प्रॉब्लम बड़ा अच्छा से एक मैं क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं. The thing is, if x1 less than x2 and fx is increasing, then we can conclude fx1 is less than fx2. Same way से if x positive है और fx is increasing function, then I can say fx is greater than f of 0. Then if x1 is less than x2 and fx is decreasing function, then this sign of inequality will be reversed. From here I can conclude if x is positive and fx is decreasing function, then fx is less than 0. Now इसके बेस पर question number 10th of our booklet. क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है. fx is equal to x upon sin x and gx is equal to x upon tan x, where 0 is where x lies between 0 and 1, then A option is fx and gx both are increasing. B option is fx and gx both are decreasing. C, fx is increasing. D part, gx is increasing. Now अब हम क्या करेंगे? We find out f dash x. It is x f dash x. It is sin x u upon v, sin x minus x cos x upon sin square x. Now x लेके 0 से लेके 1 तक we won't be able to say anything. अब इसके बारे में हम कुछ भी नहीं कह सकते, तो इसका मतलब हो गया कि we got stuck. अब x lies between 0 to 1, we won't be able to say कि sin x minus xx cos x कैसे रेंज करेगा, इसकी वैल्यू कहां से कहां तक इंक्रीज करेगी, कहां से कहां तक डिक्रीज करेगी. सो उसके लिए एक मेथड है, मैं वो मेथड फॉलो अप कर रहा हूं. दैट मेथड इज, अब डिनोमिनेटर तो हमेशा पॉजिटिव है, मेरी प्रॉब्लम है न्यूमरेटर, तो मैं न्यूमरेटर को सपोज कर लेता हूं लेट यू एक्स इज इक्वल टू, ये जो मैंने पॉइंट टू मेंबर लिखवाया था उसके बेस पर है. इन क्वेश्चनों में कई बार सेकंड डेरिवेटिव या थर्ड डेरिवेटिव की जरूरत पड़ती है, ध्यान रखना, हमें जरूरत पड़ती है सेकंड डेरिवेटिव और थर्ड डेरिवेटिव की. ux is equal to sin x minus cos x. We find out u dash x. ये बन जाएगा cos x minus it is plus x sin x minus cos x. This will be greater than 0. This will be cancelled out. This is u dash x. Now I can say for x lies between 0 to 1. For x lies between 0 to 1, or I can say or x greater than 0, it is u dash x is positive, u dash x is greater than 0, or ux is, I can say u dash x is this one, I can say ux is increasing function. इसका मतलब क्या हो गया? ux is increasing function. ux is increasing function, इसका मतलब क्या हो गया? हम रूल लगाने लगे हैं. We know
if x greater than 0 and fx is increasing, then f of x is greater than f of 0. जो मैंने रूल लिखवाया था, I can say this is u of x is greater than, this is u of x is greater than u of 0. What is u of 0? U of x is what? This is sin x. Sin x minus x cos x. U of 0 is 0. Value put करेंगे u 0. It comes out to be 0. So this is what I got it. I conclude from here sin x minus x cos x positive, or from here we can say f dash x is equal to sin x minus x cos x over sin square x will be greater than 0, or I can say it is fx is increasing function. fx is increasing function. एक बार फिर इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझ लो. हमें क्वेश्चन गिवन है, हम f dash x f x over sin x, we differentiate it and we reach it over here. अब we can't say, we can't conclude from here कि this function is increasing or decreasing. उसके लिए क्या मेथड है? मैं सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने इस ऊपर वाले डिनोमिनेटर तो पॉजिटिव है, न्यूमरेटर को ले लिया ux, उसके बाद u dash x निकाल लिया, this is x sin x. Now from here I can say x positive है, u dash x positive, that means ux is increasing. यहां से ये रूल है x positive, fx is increasing, fx will be greater than f0. I can say u of x is greater than u0. u0 is 0. I substitute the value over here. So I can say numerator positive, denominator is also positive. I can say derivative f dash x positive. So fx is increasing function. देखो इस मेथड से क्वेश्चन बिल्कुल इजी बन जाता है. द ओनली थिंग इज हमें इस रूल को याद रखना है और हमें अप्लाई करना आना चाहिए. नाउ जो प्रोसीजर मैंने फॉलो अप किया इस फंक्शन fx के लिए, अब सेम प्रोसीजर फॉलो अप करूंगा gx के लिए. gx के लिए क्या है? g dash x is equal to, this is tan x minus x secant square x upon tan x. This is g dash x. Now I can say same problem. Now I won't, for x lies between 0 to 1, I won't be able to say कि दे ये टर्म पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव. उसके लिए अब हम क्या करेंगे, से let vx is equal to, it is tan x minus x secant square x. v dash x I find out it is secant square x. It comes out to minus x into secant square x का differentiation 2 secant x tan x minus secant square x. This will be cancelled out. I can say v dash x is equal to minus 2x secant square x tan x. For x is equal to 0 to 1. For x lies between 0 to 1, I can say 2x tan x secant square x is positive. Secant square x is positive. Minus 2x tan x secant square x is less than 0. F dash x is less than 0. F dash x is less than 0. So I can say x is greater than 0, or and fx is decreasing. यहाँ से I can say fx is decreasing. fx here I can say this is v dash x. This is vx is decreasing. vx is decreasing. इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया vx is less than v of 0. x positive, v of x is less than f of v of 0. इसका मतलब क्या हुआ? v of x is less than v of 0. I can say tan x minus x secant square x. v0 it comes out to be, I can say v0 is 0. It is 0. It is less than 0. यहाँ पे हमारा रिजल्ट आ गया, this is this tan x minus x secant square x is less than 0. I can say here numerator negative है, denominator it is tan square x. So I can say tan x minus x secant square x over tan square x is tan square x is less than 0 for x lies between 0 and 1. That means gx is decreasing.
जी एक्स इज डिक्रीजिंग फंक्शन। सो हमारा आंसर क्या बना, एफ एक्स एंड जी एक्स बोथ आर इंक्रीजिंग, गलत है बिकॉज जी एक्स डिक्रीजिंग है। एफ एक्स एंड जी एक्स आर बोथ डिक्रीजिंग, ये भी गलत है। सो जी एक्स इंक्रीजिंग, ये भी गलत, तो राइट ऑप्शन इज सी पार्ट। सो क्वेश्चन नंबर 10th का जो राइट आंसर है इट कम्स आउट टू बी सी। मैं जी एक्स को एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूं, इट इज अ न्यू थिंग, न्यू फार्मूला एंड बड़ा हटके क्वेश्चन है। जब जी डैश आ गया इसके बारे में, जब कई बार हमें न्यूमरेटर ऐसे कुछ ना बता सके फर्स्ट डेरिवेटिव, तो हम क्या कर लेते हैं, सेकंड डेरिवेटिव कर लेते हैं। जैसे ऊपर वाले को हमने वी एक्स लेके वी डिफरेंशिएटेड। Now I conclude from here that v dash x is negative, double derivative we can say v dash x is negative, v dash x is negative का मतलब हो गया कि vx is decreasing function, vx मतलब this is decreasing function, this is decreasing function का क्या मतलब हो जाएगा, f dash x 0, x positive, then I can say vx is v of x is less than v0, or I can say it is tan x minus x secant square less than 0, or this whole dividing by tan square x positive quantity less than 0। ये क्या बन गया हमारा, ये बन गया g dash x, और I can say gx is decreasing function। So right option is C part। Now I am coming to the next question, that is question number 12th of our booklet। Question number 12th है, it is the value of a, the value of a for fx is equal to root 3 sin x minus cos x minus 2ax plus b decreases for all real values of x, decreases for all real values of x is given by a option is a less than 1, b a greater than equal to 1, c a greater than root 2, d a less than root 2। So normally we adopt a method, we differentiate to find out the function is increasing or decreasing। उसके लिए अब हम क्या करेंगे, this is fx, so we find out f dash x directly, this is root 3 cos x plus sin x minus 2। so हमने निकालना है value of a if this decreases for all real values of x। इसका मतलब क्या है, since fx is decreasing, since fx is decreasing function, root 3 cos x plus sin x minus 2a less than 0, I can say it is f dash x is less than 0, this is root 3 cos x plus sin x is less than 2a। what does it means, I can say इसका क्या कंक्लूड हुआ, यहां से मैं क्या कंक्लूड कर सकता हूं, बिकॉज हमें गिवन है एफ एक्स इज डिक्रीजिंग, यदि एफ एक्स डिक्रीजिंग है आई विल से एफ डैश एक्स इज लेस देन 0। now this is less than 0, this is 2a, now I can say from here it is 2a is greater than 2a is greater than say greater than every value of root 3 cos x plus sin x, or I can say 2a is greater than 2a is greater than maximum value of root 3 cos x plus sin x। we take up the extremes case, क्या लेते हैं,
2a is greater than every value of root 3x to root 3 cos x plus sin x. I take, मैं इसकी मैक्सिमम वैल्यू ले लेता हूं. जब ये 2a विल बी ग्रेटर देन इट्स मैक्सिमम वैल्यू, वहां से हमें a की राइट वैल्यू आ जाएगी. a कहां से कहां तक लाई करता है उसकी एक्चुअल वैल्यू आ जाएगी. सो आई कैन से मैक्सिमम वैल्यू ऑफ root 3 cos x plus sin x is, it is square root of root 3 the whole square plus 1. It comes out to be 2. So I can say, which implies 2a is greater than 2, or I can say a is greater than 1, or I can say a is greater than 1. Now अब हमने देखना चार आंसर्स में से कौन सा ऑप्शन है. अब हमें जो गिवन है, जो हमारा आंसर थोड़ा सा टैली कर रहा है, वो कर रहा है a इक्वल टू. नाउ यहां पर यदि वर्ड लिखा होता है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, यदि यहां पर वर्ड लिखा होता है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, तब तो हम लिखते ये बिल्कुल ऐसे करते. डिक्रीजिंग लिखा हुआ है तो एफ डैश एक्स हम इक्वल टू भी ले सकते हैं. द डिफरेंस इज, जब खाली स्ट्रिक्टली लिखा हो तब वो टेक इट लेस देन 0 और ग्रेटर देन 0. सो जब कुछ नहीं मेंशन आउट किया, डिक्रीजेस मतलब वी टेक इट इक्वल. आई जस्ट टेक इट ग्रेटर देन. 2a is greater than maximum value. I can say this is equal to 2a. A is greater than equal to 1. So the right option is 12, B part. So question number 12 ka the right option is B part. Now I am coming to next question, that is question number 13 of our booklet. We have been given out question number 13. If a less than 0, the function e the ax plus e the power minus ax is monotonic decreasing function. Monotonic decreasing function for all x, where a part is x greater than 0, b x less than 0, c x greater than 1, d x less than 1. Now we have been given this is monotonically increasing. Now what I will say, monotonic increasing मतलब स्ट्रिक्टली हो जाएगा a लेस देन 0. हमें गिवन है a लेस देन 0. दिस इज द फंक्शन fx इज इक्वल टू e दी पावर ax प्लस e दी पावर माइनस ax. f dash x is equal to e a d ax minus e a d minus ax. Now into it is a. I just take it common, a e the power ax minus 1 upon e the ax. I can say this is e the power 2ax minus 1 upon e the power ax. So this is our say f dash x. Now we have been given since a negative and हमें निकालना x का इंटरवल and fx is decreasing fx decreasing मतलब I can say f dash x will be say this is a नेगेटिव है, इसका मतलब f dash x should be पॉजिटिव. उसका रीजन क्या है, ये एक पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो दिस क्वांटिटी शुड बी व्हाट पॉजिटिव. f dash x should be, I can say f dash x should be less than 0
f dash x less than 0, or I can say a less than 0, a less than 0, and I can say e the power 2ax minus 1 upon e the power ax. This should be greater than 0. Now e the power ax is exponential function, is always positive. इसकी जो रेंज होती है वो हमेशा क्या होती है? इट इज ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स. सो इट इज ऑल, इसका आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा. तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसे इलिमिनेट कर सकते हैं. ई डी 2ax minus 1 greater than 0. Then I can say e the power 2ax is greater than 1. E the power 2ax is greater than e the power 0. Now bases are same, power must be equal. I can say 2x is greater than 0. 2ax is greater than 0. I can say x is greater than 0. X greater than 0, the right option we got it, that is, it comes out to be our A part, that is x positive. Now इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, ध्यान से, जहां पर बच्चे लोग स्टूडेंट्स गलती करते हैं वो ये है, डिफरेंशिएट करने के बाद वो लिखते हैं एफ एक्स इज डिक्रीजिंग, दिस होल फंक्शन वो क्या ले लेते हैं? डिक्रीजिंग. ऐसे दिस होल डिक्रीजिंग है, इसमें दिस जो एफ डैश एक्स है, दिट इज अ प्रोडक्ट ऑफ ए एंड दिस वन. यदि ए नेगेटिव होगा तो दिस क्वांटिटी शुड बी पॉजिटिव, तभी दोनों क्वांटिटीज का प्रोडक्ट क्या आएगा? इट कम्स आउट टू बी नेगेटिव. सो मैंने ए नेगेटिव गिवन है तो ये क्वांटिटी इट शुड बी पॉजिटिव. ई डी ए एक्स पॉजिटिव है तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, 0 इंटू ए डी एक्स इंटू 0. नाउ 1 आई टेक इट हेयर, it becomes e the power 2ax e the power 0. I can say x greater than 0. So it is, I can say this is increasing for what? X positive. So question number 13 ka the right option is A part. Now नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ले रहा हूं, इट इज क्वेश्चन नंबर 16. आई एम टेकिंग इट क्वेश्चन नंबर 16. Question number 16 of our booklet. If fx is equal to cos pi upon x, then A part, fx is increasing in 1 upon 2n plus 1 upon 2n. B, fx is increasing in 1 upon 2n plus 2 comma 1 upon 2n plus 1. C option is fx decreases in 1 upon 2n plus 1 upon 2n. fx decreases in 2n plus 2, 2n plus 1. नाउ अब हमने ये क्वेश्चन गिवन है, पहले हमने क्या निकाला? वी फाइंड आउट एफ डैश एक्स. एफ डैश एक्स कॉस पाई एक्स का आएगा माइनस साइन पाई ओवर एक्स. इट इज डी अपॉन डी एक्स अपॉन पाई ओवर एक्स, माइनस साइन पाई अपॉन एक्स माइनस पाई अपॉन एक्स स्क्वायर. I can say pi upon x square sin pi upon x. This is our f dash x. This is our f dash x. अब ये increase करेगा if this whole term will be positive. This decreases
if this whole term will be negative. अब हम यदि चारों आंसर से हम चारों आंसर ऑप्शन देखें, हमें ऑप्शन गिवन है 1/2n + 1 2n, एक ये वाला इंटरवल गिवन है, एक ये वाला इंटरवल तो सेम है। हमें सिर्फ हम क्या करेंगे, अब हम दोनों इंटरवल को ले लेंगे और दोनों इंटरवल में चेकआउट करेंगे ये जो हमारा एफ डैश एक्स है वो इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है। सो आई जस्ट टेक इट लाइक दिस वे। एक तो इंटरवल हम लेते हैं कि इफ पाई अपॉन एक्स लाइज बिटवीन 1/2n + 1 1/2n। दूसरा केस लेते हैं 1/2n + 2 पाई इट इज 2n + 1। क्योंकि ये दोनों इंटरवल गिवन है, ये एडवाइजेबल रहेगा इस क्वेश्चन में हम दोनों का इंटरवल ले लें। नाउ वी गो फॉर इट, इट इज से हम यहां पे ये भी कर सकते हैं, इनको रेसिप्रोकल करते हैं। 2n + 1 is, it comes out to be x/pi, it is 2n. Here also x/pi is 2n + 2 is, it is 2n + 1। पाई पॉजिटिव क्वांटिटी है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 2n + 1 into pi, it is x, it is 2n pi। This is equal to, it is 2n + 2 pi is x, it is 2n + 1 into pi। Now I can say this is our circle, I just draw it. This is 0 or I take it 2n, and this is 2n, this is 2n + 1. Here it will be 2n + 2. 2n + 2 will again come out to be here. Now अब मैं देखता हूं 2n pi to 2n + 1 pi, ये इसका क्या मीनिंग हुआ? इसका मीनिंग क्या हुआ? 2n pi, this is first quadrant, second quadrant, third quadrant, fourth quadrant. Here it is all sin, tan, cos. हमने सिर्फ साइन देखना है, साइन क्या होता है? I can say 2n pi, this is 2n pi to 2n + 1 pi. इसका मतलब है x lies in first and second quadrant. X lies in first and second quadrant. X lies in first and second quadrant. I can say pi upon x square sin pi upon x. It is greater than 0. F dash x greater than 0. F dash x positive है, I will say fx is increasing in first and second. That means this is the right option. Increasing in what? I can say fx is increasing in 1 and 2, or for x lies between, it comes out to be, this is 1/2n + 1, comma 1/2n. So right answer हमारा आ गया A पार्ट, बट हमने दूसरा पार्ट लिया, उसको भी करते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? 2n + 1 pi से 2n + 2 pi. 2n + 1 into pi is this one, 2n pi, or 2n + 2 into pi will come over here. इसका मतलब ये हो गया, here I can say x lies in third and fourth quadrant. Third and fourth quadrant, and sin pi upon x squared negative. I can say fx is decreasing. Fx is decreasing. Fx is decreasing in, it is 1/2n + 2, comma 1/2n + 1. So ये डिक्रीजिंग वाला हमें, इट मीन्स ये दिया नहीं हो, हमारा क्या ऑप्शन बन जाएगा? इट कम्स आउट टू बी, इस इंटरवल में क्या बन जाएगा? इट इज पॉजिटिव। आई विल से ए पार्ट इज द राइट आंसर, दैट इज fx is increasing in 1/2n + 1, comma 2n. So question number 16 का the right answer is, right option is A part.